आगे आगे चलो। कैसा लगा प्रमाण भाई? बढ़िया, सब बढ़िया। An evening in Kasol. Namaste ji, welcome back to the vlogs. And stayed here last night, had a beautiful stay, party vibes at every corner of the small town of Kasol. And just behind me you can see that's the sunrise here, quite clear as compared to that of the cities. And abhi ke liye we'll do a quick breakfast and then head our way to the starting point of the trek to Kheerganga. So we are staying at this beautiful place which is in the middle of the mountains, in and around apple trees and whatnot, just as close to the nature as we can, and we'll be heading to Kheerganga to be more closer to nature. इतना तो निकल जाएगा और दबाओ ना सीधा है ना, निकल जाएगा। एक साथ निकलता सर। ना होता है। ऐसा ये है भाई, है ये है। बांध कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन से? माया बांध, सिल्की बांध और चकना बांध। फुर्गी बांध? फुर्गी बांध भी है पर वो पहले से फेमस नहीं ना क्यों नहीं है, फुर्गी बांध बहुत फेमस है। हाँ। तो we have reached Persani where our trek for Kheerganga starts, and the views are majestic. So we'll be crossing this dam through the jungles. We'll continue our trek. This is Pranav, this is Nimish. Both have come to my earlier videos as well. तो भाई क्या लग रहा है तुम्हें ट्रैक के बारे में? देखते हैं। तीसरा ट्रैक है भाई अपना। गाइड हमने किया नहीं है। गाइड हम बहुत लोगों ने ट्रैक कर चुके हैं तो ट्रेल तो बनी होगी और काफ़ी लोग जा भी रहे हैं हमसे पहले। चलते हैं धीरे धीरे पीछे पीछे, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो मिल ही जाएगी। वाह वाह। भटके तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। तो हम घर से भी निकल गए हैं और हम अपना रास्ता भी खुद बना ही लेंगे। ये कुछ पार्वती रिवर स्टार्टिंग पॉइंट ही इतना मेजेस्टिक है, और ये हमें सो डैम के ऊपर है। इसको क्रॉस करने के बाद चलते चलते ट्रेल से अपना खीरगंगा का रास्ता बनाते हैं। सो ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट ट्रैक का। भोले का नाम लेके करते हैं ट्रैक शुरू।
हाँ जय बोले। One hour of trek, and this is our first stream or river crossing, whatever you want to say. Sir? हाँ स्टार्ट है। Now it's my turn. सो 3-3.5 किलोमीटर करने के बाद अब इधर हम एक डेंस फॉरेस्ट में हैं और चिड़िया के अलावा यहाँ पे और किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, और यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक और बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा इधर से ट्रैक डिफ़िकल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी सारी शॉप्स है इसमें, कोल्ड ड्रिंक, पानी, बाकी चीज़ों की। So in my opinion the entire Kheerganga trek is up and down, up and down. So now I'm heading to a small descent and then there is another rise. So it's full of these ups and downs here. Small path which you have to take care of. There is a small dog here. I'm waiting for someone. Hey. So, okay. So, ये बहुत सारे पेड़ या तो ऊपर से काट के फेंके गए हैं नीचे भेजने के लिए या फिर ये सारे टूट गए हैं। तो आगे चलें? आराम से। तो इधर नेचुरल सोर्स है एक
उधर बहुत सारे नेचुरल सोर्स है, तो पानी की वैसी कोई कमी नहीं है। ठंडा चिल्ड ग्लेशियर वाटर। भैया फ्रिज की जरूरत नहीं है इसमें, बिल्कुल भी। बहुत ठंडा पानी है। बहुत ठंडा पानी है। आपके दांत जम जाएंगे, पूरा जबड़ा जम सकते हैं। केवल सिर्फ पीने के लिए, आप नहाइएगा मत। नहाने जितना नहीं है, नहाने जितना बहुत समय लग बहुत सकता है। ठंडा है, बॉडी को दोबारा गर्म करने में बहुत टाइम लग सकता है। हाँ, यहाँ से भी एक ट्रेल है, अब आई डोंट नो ये हमारे ट्रैक का ट्रेल है कि नहीं। फ्रेश ब्रो। So I was talking about this waterfall. So this was quite refreshing, taking kind of bath in that ice chilling cold water of the waterfall. uh, Good morning from Kheerganga. So it was a long trek yesterday and took us good 6.5 hours to complete those 12 kilometers. So tired yesterday. We got here, had some food and slept. So it's 7-8 and it's bright outside and we will be planning to go to the hot water spring and then probably come back, take a breakfast and head down for the descent. So anyone thinking to come here, there is ample of tents out here and ranging from 500 to 2700 depending upon how many people you're coming, and the food is okay. काफ़ी टाइम तो हम अंदर टेंट पे ही बैठ के थोड़ा रिलैक्स करते रहे, लेकिन बाहर जाके हमने जो व्यू देखा, माउंटेन्स और
मॉर्निंग की वो सनराइज, जो भी पार्टी वाइब्स लास्ट नाइट थी वो सब ऑफ. एवरीवन वाज लाइक enjoying that early morning sunrise. तो फाइनली जिस चीज़ के लिए हम आए थे, द हॉट वाटर स्प्रिंग. सो द हॉट वाटर स्प्रिंग हमारे टेंट से 300 मीटर दूर था. एंड गेटिंग इन टू दैट पूल ऑफ हॉट वाटर वॉज सो डैम रिलैक्सिंग. 12 किलोमीटर के ट्रैक के बाद रियली दिस इज़ वॉट यू नीड, अ हॉट वाटर स्प्रिंग. We stayed for a good 30 minutes there, and उसके बाद we changed out, and then we went to the Shiv temple, which is just above this hot water spring pool. This marks the end of our beautiful trek and our beautiful trip.